Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture 28 for the course of Principles of Communication Systems. So this is what we covered previously in our course. In the last lecture we covered quadrature, amplitude modulation, and DPSK techniques. So these are the topics that we are going to cover in this lecture. It include the probability of error and bit error rate and error performance of certain different modulation schemes, digital modulation schemes. So we have covered almost all the digital modulation schemes except some of the advanced ones, which you are going to see and analyze them in your digital modulation course. And some of them that we have left will be considered as your uh, homework assignment per se. So let's start with today's lecture. What is probability of error and bit error rate? So almost both of these terms they are the same, except that the probability of error is a more theoretical kind of a concept, whereas bit error rate is a practical kind of a thing. So probability of error, as I told you, it's a theoretical term, and it's the mathematical expectation of bit error rate for a given system, whereas bit error rate is an empirical record of a system's actual bit error rate. So actually, bit error rate is measured in an experiment, whereas the probability of error is actually uh, computed mathematically. So for example, if a system has probability of error equal to 10 to power minus 5, that means you have an error after every you have a single error after transmitting 100,000 bits. Okay, 10 to power minus 5, so it's 1 by 10 to power minus 5 is 1 by 100,000. Whereas if a system has bit error rate of 10 to power minus 5, this also means the same thing, but now it means that in the past we have realized the performance of that system in the past. We practically measured this thing. Okay, and we saw that in this case, in case of bit error, we will see that we saw that one bit for every 100,000 bits had an error. Okay, so bit error rate is, so the crux of the thing is bit error rate is measured, whereas uh, it is measured and then compared to the expected probability of error or the theoretical performance of that system. Now, probability of error, it's a function of carrier to noise power ratio. Okay, more specifically, it is the average energy per bit to noise power density ratio. We will now see these things in detail. And the number of encoding conditions, okay, it is related to this thing. So carrier to noise power ratio is the ratio of average carrier power to the thermal noise power. Okay, so carrier power can be stated in watts or dBm, where the carrier's power in dBm is equal to 10 log carrier power in watts divided by 0.001. Whereas thermal noise, which we have already covered in our starting lectures at the start of this course, we studied these different types of noise. So thermal noise can be expressed mathematically as kTB, and the unit will be watts, where N is the thermal noise power, okay, K is the Boltzmann constant, proportionality constant, T is the temperature in Kelvin, and B is the capital B is the bandwidth in Hertz. So if you want to see this noise power in dBm, you are going to use this formula where you take the 10 log base 10 of this noise power in watts divided by 0.001. So now we are interested in carrier to noise power ratio. What is this carrier to noise power ratio? So mathematically, if you consider the carrier to noise power ratio, if you are taking the carrier and noise power in watts, then it is equal to this thing, and it is going to be unitless because
carrier power is also measured in watts, and the noise power is also measured in watts. If you want to compute it in dB, then in such a case, it is going to be equal to 10 log power of the carrier divided by power of the noise. Or you can also subtract the carrier power and dBm from you can subtract the noise power and dBm from the carrier power and dBm. We have studied this logarithmic scale in detail. So now there is another term known as energy per bit. It is the energy of a single bit of information, and mathematically energy per bit can be computed as, and it is generally denoted as EB and is computed as CTB. The units are joule per bit. So EB is the energy of a single bit, TB is the time of a single bit in seconds, and C is the carrier power. If you are converting it into viewing it into a dB scale, then dBj is equal to 10 log of the energy of the bit. And in this way, you are going to express it in dBj. And since the time of a single bit is equal to 1 hour, the bit rate, then EB can be expressed in the form of bit rate also, energy per bit, that is equal to carrier power divided by the bit rate. So if you want to compute the energy of per bit, if you are relating it to the bit rate, then you can compute it as equation 36, which is 10 log of carrier power divided by the bit rate, or equivalently this thing. Now the noise power density is the thermal noise power normalized to a 1 Hz bandwidth, where you are going to consider noise spread per unit Hertz. Okay. So mathematically, the noise power density can be computed as N naught is equal to, this is what this is the normalized uh, this is the noise power density. So it is equal to the noise power divided by the bandwidth of the system. This way, you can compute the noise power density, where N is the thermal noise power. Now, if you want to again convert it into dBm, you can use the log formula, and since they are power, so it is going to be 10 log, this is dBm, okay, the thermal noise power in dBm minus 10 log of B. This way you are going to compute the noise power density in dBm. Now combining the previous two, equation 29 and 38, you can get this thing, okay, where this was the thermal noise power and B is the bandwidth. And if you want to compute it in dBm, you can use this formula. So energy per bit to noise power density is also a thing. Okay, energy per bit to noise power density. That means it's a ratio of EB by N naught. It is used to compare two or more digital modulation systems that are using different transmission rates. Okay. EB by N naught is generally used when you are computing two different modulation schemes which are transmitting at different data rates. Okay. So the energy per bit to noise power density ratio is simply the ratio of energy of a signal to the noise power present in 1 Hz of bandwidth. So EB by N naught normalizes all the multi-phase modulation scheme to a common noise bandwidth, thus allowing a simpler and more accurate comparison of their error performance. Mathematically, it can be written as carrier power divided by the bit rate, and uh, noise power, thermal noise power divided by the bandwidth, and overall you are going to get this thing. This is the expression for EB by N naught. And if you
where EB N naught is the energy per bit to noise power density ratio. So if you rearrange equation 43, that is the last equation on the previous slide, you get the following expression, this kind of a thing, where EB by N naught is the energy per bit to noise power density ratio, C by N is the carrier to noise power ratio, and B by FB is the noise bandwidth to bit rate ratio. So you can again compute it in dB scale as well. Just take the log of 10 log of this thing, equation 44, you are going to get this final expression. Now if you see this equation 44, you can see that EB by N naught ratio is simply the product of carrier to noise power ratio and noise bandwidth to bit rate ratio. And when the bandwidth equals the bit rate, we have seen, we have done such sort of modulation schemes. ठीक है, ऐसे modulation schemes हमने देखी हैं जिनमें हम जो bit rate है हमारा, that is equal to the bandwidth. So in such a case EB by N naught will be equal to C by N, only this part. ठीक है, जहाँ पे आपके पास bandwidth is equal to FB, so they will cancel each other out, और आपके पास EB by N naught है, it is going to be equal to C by N. So in general, जो मिनिमम कैरियर टू नॉइज पावर रेशो चाहिए होती है आपको कैम सिग्नल्स के लिए, ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स में, इट इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर कंपेरेबल पीएसके सिस्टम्स. ठीक है, और आल्सो द हायर लेवल ऑफ एनकोडिंग यूज्ड, द हायर द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे, द हायर द मिनिमम कैरियर टू नॉइज पावर रेशो. ठीक है जी, जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे उतनी आपकी ज़्यादा मिनिमम कैरियर टू नॉइज पावर रेशो होगी. So let's do an example. वो कहता है for a QPSK system and given parameters, determine the carrier power in dBm, okay, noise power in dBm, noise power density in dBm, and कैरियर पावर हमने देख ली थी dBm में. नॉइज पावर dBm में हमें पता क्या होती है, नॉइज पावर डेंसिटी भी हमें पता है क्या चीज़ होती है, सिर्फ आप बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं. एनर्जी पर बिट इन dB जो है ये भी हमने देख लिया. कैरियर टू नॉइज पावर रेशो इन dB, ये भी हमने फार्मूला देख लिया, और एट द एंड आपने EB बाय N नॉट रेशो कंप्यूट करना. तो सबसे पहले आपके पास जो कैरियर पावर है, इट इज इक्वल टू, इट इज गिवन, ठीक है, कैरियर पावर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 वाट्स. जो बिट रेट है इट इज 60 किलोबिट्स पर सेकेंड. थर्मल नॉइज की पावर है दिस मच, 1.2 into 10 to power minus 14 watts, and the bandwidth is 120 kilohertz. So you have all the unknown variables here, so you are going to just plug them in the formulas. So सबसे पहले उसने पूछा कैरियर पावर एंड dBm. कैरियर पावर आपको दी है, dBm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 10 log of this carrier power C divided by 0.001. This gets you the carrier power, which is minus 90 dBm. Now the noise power in dBm can also be computed easily using the same formula. आपको noise power पता है, it is 1.2 10 to power minus 14. So same काम आपने यहाँ पे किया, और parts A और B आपने यहाँ पे solve कर लिया. Next thing is noise power density in dBm. So noise power density आप determine करते हैं by substituting all these values in equation 40. So we know N naught will be equal to the carrier power minus the noise power, which is equal to carrier power minus the 10 log of the bandwidth, which is equal to minus 160 dBm. ठीक है, you can compute it using that 10 log of N naught by N by B also. ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है लॉगरिथमिक स्केल में आपको आइडिया है, तो डायरेक्टली वो यूज़ कर लेते हैं. अब एनर्जी पर बिट आपने डिटरमिन करनी है, तो देन वी नो दैट एनर्जी पर बिट इज इक्वल टू दिस थिंग. इसका फार्मूला में इक्वेशन 36 आप देख लें, वहाँ से आपको पता लग जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
कैरियर टू नॉइज पावर रेशो. सो अगेन इक्वेशन 34 से आपको ये चीज़ पता है किस चीज़ की इक्वल होती है. जस्ट सिंपली प्लग इन दीज वैल्यूज एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग. ठीक है. तो दिस इज द कैरियर टू नॉइज पावर रेशो. ठीक है, 19.2 dB. एनर्जी पर बिट टू नॉइज डेंसिटी. तो ये हमने जो लेटेस्ट इक्वेशन की थी, इक्वेशन 45, वहाँ से आप कंप्यूट कर सकते हैं. वहाँ से जब आपने कंप्यूट की, यू फाउंड इट आउट टू बी 22.2 dB. सो बेसिकली ये जो आपकी एग्जांपल है, आप डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज कि कौन सा कैसे चीज़ कैसे काम करती है. ई वी बाय नॉट, लेट्स से फॉर सेम, maybe you can compare FSK, PSK and ASK with same kind of maybe power levels and stuff. ठीक है जी. अच्छा, PSK की एरर परफॉर्मेंस देख लेते हैं. सो PSK एरर परफॉर्मेंस अगर आप एनालाइज करें, बिट एरर रेट परफॉर्मेंस, you will see in general terms के it is directly related to the distance between points on a signal state space diagram. नहीं, जो आप कंस्टेलेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डायरेक्टली अफेक्ट्स है बिट एरर रेट. जितना वो क्लोज होगा उतना कम आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होगा. जितना वो ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होगा. फॉर एग्जांपल बीपीएस के अगर आप कंसिडर करें, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, तो आपके पास कॉन्स्टेलेशन डायग्राम उसकी कुछ ऐसे है कि ये आपके पास एक बिट है और ये दूसरा, यानी 180 डिग्री हैं एक दूसरे के. सो दिस मीन्स जो मार्जिन ऑफ एरर, जो आपके पास थ्रेशोल्ड है, वो कितना है आपके पास, 90 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, 90 डिग्री इन प्लस माइनस 90 डिग्रीज, एंड सेम थिंग गोज फॉर दिस वन. यानी अगर आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉइज नहीं ऐड होती, लेट्स से ये बिट इसमें इतनी नॉइज ऐड अप हो जाए कि ये इस साइड पे फ्लिप हो जाए, फिर तो एक अलग चीज है. बट यू विल नीड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉइज पावर फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है जी. सो अगेन यहाँ पे अगर आपके पास फेज शिफ्ट एक्सीड करता है प्लस माइनस 90 डिग्री, तो देन सिग्नल एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा बियॉन्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, और देन इट इज गोइंग टू गो इनटू द एरर रीजन हियर. ठीक है. बीपीएसके के लिए अगेन एक सिग्निफिकेंट नॉइज वेक्टर विद सर्टेन सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज चाहिए होगा. ठीक है, तो जो आपके एरर प्रोड्यूस कर सके. और जनरली जो आपके पास पीएस के सिस्टम है, उसका जो फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, इट इज दिस थिंग. ओके, थ्रेशोल्ड पॉइंट इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय एम. ठीक है, where m is the number of symbols. In case of BPSK, it is equal to 2. So pi by 2 plus minus pi by 2 are the threshold points for BPSK. Now the phase relationship between signaling element for BPSK, that is 180 degree out of phase होते हैं. ठीक है, ये ऑप्टिमम सिग्नल फॉर्मेट है और इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सिग्नलिंग. ठीक है, और ये अकर होगी जब दो बाइनरी सिग्नल लेवल्स are such that when one signal is exactly 180 degree of the other. ठीक है, या नेगेटिव हो. और ये एंटीपोडल सिग्नलिंग आपकी बीपीएस के ही में आपके पास अचीव हो सकती है, क्योंकि there is no other bit by bit signaling scheme which is better than this antipodal kind of a signaling. So ये बीपीएस के एंटीपोडल जो बीपीएसके की परफॉर्मेंस एज अ रेफरेंस कंसिडर होती है फॉर कंपैरिजन. सो जो एरर परफॉर्मेंस है बाकी जो पीएसके टेक्निक्स हैं उनकी, इट कैन बी कंपेयर्ड विद बीपीएसके सिंपली बाय डिटरमिनिंग द relative decrease in error distance between points. So
यहाँ पे अगर आप देखें यू विल सी डिफरेंट एरर रीजन्स, ठीक है। यू कैन सी कि ये आपके पास दिस इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर बीपीएस के, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड व्हाट दीज सिंबल्स डिनोट, ठीक है। कैपिटल डी क्या डिनोट करता, स्मॉल डी क्या डिनोट करता, ठीक है जी। नाउ कंपेयर दिस थिंग टू दिस वन, ठीक है। दिस इज क्यूपीएस के, इसका आपके पास एरर रीजन्स बताए हुए हैं। सो इन केस ऑफ पी QPS के, if you use the formula from the previous slide, we are going to get your threshold point equal to pi by 4, यानी प्लस माइनस 45 डिग्री। सो ये वाला सिंबल इसके लिए जो आपके पास थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं वो ये है और ये है, ठीक है जी। अगेन इन दिस थिंग आल्सो ध्यान में रखें कि आपके पास जो स्मॉल डी है व्हाट इज दैट थिंग, ठीक है, और कैपिटल डी क्या चीज़ है, ठीक है जी। ये चीज़ें ध्यान में रखें, ये आगे हम यूज़ करेंगे। सो डिफरेंट एरर रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से दिस इज द थ्रेशोल्ड रीजन, ठीक है। अब 1 1 के लिए एरर रीजन कौन सा होगा, ये सारा होगा, ठीक है। ये सारा तीनों बाकी क्वाड्रेंट्स होंगे, यानी 1 1 किसी तरह से उसमें इतनी नॉइज एड अप हो जाए कि वो 45 डिग्री से प्लस या माइनस से ऊपर उसमें नॉइज एड अप हो जाए। नॉइज ऐसी एड अप हो कि इसका जो वेक्टर है वो स्विच कर जाए इन एनी अदर क्वाड्रेंट, तो देन यू आर गोइंग टू हैव कंसिडर दैट रीजन एज एन एरर रीजन फॉर दैट काइंड ऑफ अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 1 1 के लिए आपके पास जो एरर रीजन है ये सारा है, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे अगर वो किसी भी इस रीजन में होगा, यू कैन इजीली डिटेक्ट कि दिस वाज 1 1। सो PSK के लिए जनरल फार्मूला जो है फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट्स, इट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है जी। साइन थीटा इज इक्वल टू d2 by d, ठीक है, where this is equal to 360 by 2m, m is the number of phases and number of symbols, ठीक है, और d is the peak signal amplitude and small d is the error distance। अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो यू कैन कंप्यूट द error distance which is going to be equal to 2 sine of 180 degree by number of phases into the peak signal amplitude d, ठीक है। सो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं ये चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कंप्यूट दिस थिंग d, ठीक है, where d is the error distance, ठीक है, so then you can use this formula to compute the error distance, ठीक है, which actually came from this one। so next जो फिगर होगी it is going to show the signal state diagram for QPS के, rather this is the figure, ठीक है। ये फिगर B थी, फिगर 47 की B पार्ट, A में आपके पास BPS के था इसी का। so from figure 47 and 48 it can be seen that QPSK can tolerate only a plus minus 45 degree phase shift, ठीक है। अब क्लियर है आपके, अगर देखें भी तो प्लस और माइनस 45, सेम गोज फॉर दिस सिंबल, प्लस 45 इन 45 डिग्री इन वन डायरेक्शन, 45 डिग्री इन अनदर, ठीक है जी। तो मैक्सिमम फेज शिफ्ट है फॉर 8 PSK और 16 PSK, इट इज प्लस माइनस 22.5 एंड 11.25 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। सो द higher levels of modulation require greater energy per bit to noise power density ratio to reduce the effect of noise interference, ठीक है। यानी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए अगर आप हायर ऑर्डर कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से 16 और 32 बिट 32 PSK, so you are going to need a greater energy per bit to noise power density ratio, ठीक है। Yeah, that means the energy per bit needs to be sufficiently higher. The general expression for bit error probability of bit error for an M phase PSK system, it is equal to this thing, ठीक है, where f is an error function
और z इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है जी। बाकी इसमें सारी नॉन वेरिएबल्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो। सो अगर आप ये वैल्यूज प्लग इन करें और QPS के, you will see that BPSK and QPSK are going to give you same performance। ये इस वजह से है कि आपके पास there is a 3 dB reduction in error distance of QPSK and it is offset by 3 dB decrease in the bandwidth। तो बैंडविड्थ जो हमने देखा था, बैंडविड्थ कंप्रेशन वाली चीज़। और जो रिलेटिव विड्थ्स हैं, नॉइज बैंडविड्थ, इट आल्सो मस्ट नीड्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिवली जो आपके पास नॉइज की बैंडविड्थ है वो भी तो कम हो रही है जैसे जैसे सिग्नल की बैंडविड्थ कम हो रही है, ठीक है जी। दस both systems provide, यानी BPSK and QPSK they provide optimum performance। और नेक्स्ट जो फिगर है उसमें हम देखेंगे एक एरर परफॉर्मेंस डिफरेंट 2, 4, 16 and up to 32 PSK systems as function of EB by N naught। So this x-axis पे आपके पास EB by N naught and dBs and probability of error है on y-axis। So we need to have the minimum probability of error and we want it to have at the minimum EB by N naught, ठीक है। So for example इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि आपके पास EB by N naught 7 dB है। for QPSK and BPSK you will have 10 to power minus 3 and the error rate आपके पास 10 to power minus 3 होगा, ठीक है। 1 in every 1000 bits is going to be an error which is a very big kind of error rate। However, अगर आपके पास EB by N0 QPSK और BPSK के लिए अगर 12 dB हो जाता है तो then you will have 10 to power minus 8, ठीक है। 1 in every 10 million, ओके। सो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपके पास रेट है। सो ऑन द अदर हैंड अगर 32 लेवल PSK को देखें तो EB by N0 इस केस में अगर 19 dB है, it is equivalent to the bit error rate in such a case is equivalent to 7 dB, EB by N0 7 dB for BPSK and QPSK, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें 32 PSK को विद BPSK एंड QPSK तो इन दोनों के एरर रेट सेम होंगे, 10 टू पावर माइनस 3 होंगे। अलबत्ता एक में आपको 7 dB पर EB by N0 एक में 7 dB है और एक में 12 dB है, ठीक है। सो ऑल्दो आपकी जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी वो सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू नीड टू ट्रांसमिट मोर पावर, ठीक है जी। सो यू कैन कंपेयर ऑल दीज टेक्निक्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 टू पावर माइनस 6 के केस में ये आपके पास 10 टू पावर माइनस 6 एरर रेट फॉर EB by N0 ऑलमोस्ट इस केस में कितना जी 11 dB है। फॉर BPSK एंड QPSK फॉर 8 PSK इट इज ऑलमोस्ट 14 dB, ठीक है। एंड फॉर 16 इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 18 dB, ठीक है। सो दीज आर नोन एज वाटरफॉल कर्व और यूजिंग वाटरफॉल कर्व यू कैन इजीली डिटरमाइन किसकी बिट एरर रेट परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। लेट्स से कल को आप कोई टेक्निक इम्प्लीमेंट ऐसी कर लेते हैं जिसकी में भी जो बिट एरर रेट परफॉर्मेंस है इट इज वेरी गुड वन, ठीक है। बड़ा शार्प किस्म का वाटरफॉल कर्व है, मे बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस विल मीन के जितना वो शार्प होगा उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। और जितना उसका स्टार्टिंग पॉइंट लोअर होगा उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है जी। So this is how you read a waterfall curve। So let's do an example। वो कहता है determine the minimum bandwidth required to achieve a probability of error 10 to power minus 7 for an 8 PSK system operating at 10 megabits per second। FB आपके पास 10 megabits आ गया, probability of error 10 to power minus 7 with carrier to noise power ratio of 11.7 dB। अच्छा,
Now, from the previous figure, minimum EB by N naught ratio to achieve probability of 8 PSK system, जो previous figure था, ठीक है, उसे ग्राफ पे अगर आप देखें तो you will see कि 8 PSK system के लिए it was equal to 14.7 dB, ठीक है, और minimum bandwidth is found by rearranging this equation 44 which we did previously, ठीक है, so थोड़ा सा इसे rearrange करें and you are going to get bandwidth of 20 megahertz. ठीक है, फार्मूलाज पिछले देख लें, वहाँ से आप ये आराम से कर सकते हैं. So this is the performance comparison of different digital modulation schemes. You can say the carrier to noise ratio as well as the EB by N naught ratio in dBs. ठीक है जी, और इसमें आपके पास PSK और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिफरेंट ये आपको चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, और ये आपके पास है बिट एरर रेट 10 टू पावर -6 अचीव करने के लिए. सो अगर आप देखें, लेट्स कंपेयर 64 कैम, इसमें EV बाय N नॉट आपको चाहिए 18.8 to achieve a bit error rate of 10 to power -6, whereas in the case of BPSK you just need 10.6 dBs, ठीक है, EB by N naught to achieve the same bit error rate, although you are sending more information but at the cost of power. Yeah, so there is nothing free, everything has a cost associated. So anyhow, this was the end of the lecture and the course. So maybe you should have look at some exercise problems, something like that, ठीक है. So this was the end of the lecture. Previous slide पे जो चीज़ थी वो just आपको बताने के लिए था कि you should be able to do such kind of problems. I have shared this book on your portal CA online, और डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से. वहाँ पे I guess मैंने 16th या 17th जुलाई को 2 बुक्स ऐड किए हैं. एक आपकी रिलेटेड है टू दिस स्टफ, ठीक है, जहाँ से ये स्लाइड्स बनी है, और देयर इज अनदर रेफरेंस बुक आल्सो, ठीक है, in case you are going to have an exam. So we will be using all these books for your exam, ठीक है. Maybe it is going to be an open book, I'm not sure yet, जो भी डिपार्टमेंट की पॉलिसी आती है we'll see about that, ठीक है जी. Okay, this was today's lecture. See you in the next week, which most probably हम देखेंगे कि मैं भी रिवीजन कुछ कर लें या आपके रिवीजन रिलेटेड ही चीज़ें होंगी सारी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.